Welcome to all to Jagadananda YouTube channel, and please today we'll discuss about the Daffodils poem, second stanza, third stanza and fourth stanza. Please observe it without skip, and go to the bell icon and like it, subscribe it. So also give many comments, then we all will get benefit. Thank you all. Myself Sushant Panda, and I wish all the best. Thank you. All to the poem Daffodils, written by William Wordsworth. We discussed the first stanza. Today we'll discuss about the second, third and fourth stanza. Second stanza, first line, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. The thought of the poet goes to earth to heaven. In this stanza, the thought of the poem goes to earth, from earth to the heaven. कविंकर लक्ष्य पड़े जाइए पृथ्वी आकाश को, हेवन कहले आकाश. And first line, continuous as the stars that shine, stars that compared with the daffodils, daffodils with the stars, daffodils with the stars, and as is used. So here first line, the figure of speech is simile. प्रथम लाइन रो अलंकार होची simile. Second line को जिबा, and twinkle on the Milky Way. Milky Way, twinkle, TWINKLE, twinkle कहले मिटी मिटी करिबा. Twinkle twinkle little star, how you wonder what you are. Here the poet compared the daffodils with the stars of the sky. Twinkle on the Milky Way. Milky Way कहले छाया पथ. Milky Way जेते बळे स्टार गुडा को छाया पथर तळ को आसंती, पृथ्वी रो केंद्र आडे के आसंती, से माने ट्विंकल करंती. किंतु कवि कहउछंती the stars, the sign of the stars, the is no important. The star sign of the stars is less than the sign of the daffodils. They stretched in never-ending line along the margin of heaven. They means the daffodils stretched in never-ending line. एते लंबी कर पड़ीचंद never-ending line. आखि को तांकर पाउन कुआडे. They stretched in never-ending line. Says with the daffodils. Last line of this poem is a figure of speech, is alliteration. What is alliteration? Alliteration कहले अनुप्रास अलंकार. ओडिया रे अनुप्रास अलंकार कहले कौन, जो अलंकार रे जो शब्द रे बा पद रे व्यंजन वर्ण रे बारंबार उच्चारण होथुबो ताको अनुप्रास अलंकार कहा जाए. जेमिति कि तार उदाहरण हम कहली, देखि नव कालिका बकालिका मालिका अली कालिका का तस्परी रक्षा केमंत करी करी बामत्त करी गति के हेमंत गो विचारी सहचरी. एटे बारंबार गोटे वर्ड पद होची, गोटे वर्ड बारंबार उच्चारण होची. सेमनि इंग्लिश रे बी वावेल कहले स्वरवर्ण ए ई आई ओ यू छाड़ दला पर जहा रहिला आउ 21टा होची व्यंजन वर्ण बारंबार एडे उच्चारण हेची डी. समस्त देखिबा डी उच्चारण हेची बारंबार काहेकि एंड डांसेस विथ द daffodils. चार थर एडे डी, 4 times of the d is repeated here. So the figure of speech is alliteration. Thank you all, and please like and subscribe and comment for this poem. Thank you. Next class will discuss. Best of luck. All the best. Myself SK Panda. Thank you to all. On the Milky Way. Third line मुझे They stretched in never-ending line. They कहले daffodils. They stretched लंबी करथिले never-ending line. कोड से माने शेष होईची कविंकर मने पडुन देखले तांकर नजर पडुनी. They stretched in never-ending line. Here the third line figure of speech हला hyperable. Okay, आमे figure of speech जिबा. First line figure of speech simile,
and third line ର figure of speech होची hyperable. Along the margin of a bay where the daffodils stretched in a never ending line, along the margin of the margin कहले धार, margin of the bay, bay bay कहले lake. The bay means lake. Along the margin of the bay अर्थात लेक रो मार्जिन उभय साइड रे से माने लंबी थिले. केतिक लंबी थिले? The poet says that 10,000 saw I at a glance कहले थरे गोटिए चाहाणी रे at a glance कहले गोटिए चाहाणी रे केतिक से देखि चंती 10,000 saw मु देखिली 10,000 it was very great numbers of a large numbers of the daffodils that the poet saw both the margin of the bay, that along the margin of a bay 10,000 saw I at a glance at a time re se 10,000 देखिले 10,000 fifth line also personification hyperable. Fifth line ro figure of speech होची hyperable. Touching their heads in sprightly dance से माने मुंडो हलेई करी touching कहले हलेइबा their heads in sprightly dance. sprightly कहले जीवंत टिके नर्तकी मानक परि जीवंत मानक परि से माने डांस करथुले. they touching their heads in sprightly dance जीवंत परि से माने नृत्य करथुले. so the poet says that daffodils are the like the lively से मानक जीवन थिला परि से माने dance करथुले. so the figure of speech is here personification. okay, personification sixth line ro figure of speech hochi personification. okay, and here the rhyme scheme also a b b c c a b c c. third stanza second stanza ro rhyme scheme hochi a b c c. okay, next third stanza को जीवा. The waves besides them danced, but they outdid the sparkling waves in gill. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed, but little thought what wealth thee so to me had brought. The mind of the poet went to the waves, and he compared here with the daffodils and the waves. Lake of waves सहित तरंग सहित सब कंपेयर करचंती. but the dancing of the waves was very important, very likely than the dancing of the daffodils. daffodils रो डांस ठारू कभी देखिले जे waves रो डांस ठारू daffodils रो डांस टा भारी इंटरेस्टिंग थिला. and the poet also very motivated to the daffodils dances of the daffodils than the waves of the lake. so here कहले the waves besides them danced. daffodils रो साइड रे daffodils रो साइड रे waves उडा को डांस करचंती. but they outdid the sparkling waves in gill कहला आनंद. एट देखिबा स्टांजा 3 रे compared with the waves and the daffodils and gill कहला आनंद. okay, a poet could not but be guy कहला आनंद. देखिबे एटी केते आनंद वाड आसीबो. a poet could not be but be guy कभी किछि चिंता करि पन्नाहांती किंतु आनंदित होचंदी. outdid the sparkling waves in gill रो तार सेकंड लाइन रो figure of speech is personification. okay, a poet could not but be guy in such a jocund company. jocund कहला आनंद, कंपानी कहले परिवेश. ए आनंद परिवेश रे कभी किछि चिंता करि पन्नाहांती खाली आनंदित होचंदी. एंड जकंट कंपानी को आनंद सहित कंपेयर करा गला. से कंपानी को से इन सच ए जकंट कंपानी आनंदित परिवेश सहित कभी कंपेयर करचंती निजको निजर आनंद को. तो हियर द फोर्थ लाइन रो मेटाफर होचे तार फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर. ओके, आई गैज्ड and gazed but little thought. कभी कहउचंती I gazed and gazed. से अनुमान कले निरीक्षण रे अनेले daffodils बाट को. little thought means no thought. किछि भाबी पाले नाही. ताकू कोन वर्णना करिवे daffodils को से केते भलो पाउचंती कोथरे केमिति लेखिबे से किछि चिंता करि पाले नाही.
What wealth this so to me had brought. से जो दृश्य है व्हाट वेल्थ वेल्थ कहले संपत्ति द सो कविकर भल संपत्ति हूँ कौन सीनेरी डाफोडिल्स को देखीदेला सी पाइले मन को मन चिंता कले व्हाट वेल्थ मुझे संपत्ति पाइली व्हाट वेल्थ दिस सो टू मी हेड ब्रॉट मो पाई केते संपत्ति आनी देथिला ओके एंड लास्ट स्टांजा आउ हियर देखिबा आर राइम स्कीम दा पिला बने देखिबा ए बी एंड बी सी सी ओके and rhyme scheme of second stanza third stanza and fourth stanza is different than the rhyme scheme of the first and second प्रथम स्टांजा एवं सेकंड स्टांजा रो राइम स्कीम दा ए बी सी सी थिला एंड थर्ड स्टांजा रे चेंज ही एची ए बी सी सी फोर्थ स्टांजा आल्सो ए बी सी सी ओके एंड लास्ट स्टांजा रे कभी often far often कहले बेले बेले when on my couch I lie couch कहले बारंडा lie on his couch परीक्षा रे पचारिबो क्वेश्चन पचारिबो where did the poet see the daffodils से पचारिबो what does the poet compare the daffodils कंपेयर कौन करचंदी आ गोटे कथा परीक्षा गोटे क्वेश्चन आसीबो where poet written the poem daffodils whether of the lake or on the lake side रे ना lake बाहरे तार हब of the lake means lake पदा को जाइकरी से लिखी चंती से कोठ लिखिले से कहले far often when on my couch I lie मुझे तोले आम घर रो बारंडा रे मु बसी थाए in vacant or pensive mood कहला अवस्था कभी करे दीटा अवस्था आछि परीक्षा रे भी पचारि पारे what moods दीटा मूड कौन व्हाट वर टू मूड्स है वैकेंट मूड और पेंसिव मूड मुझे तो बड़े आम बारंडा रे एकुटिया बसी थाए वैकेंट और पेंसिव मूड चिंताग्रस्त होते एकुटिया बसी थाए दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई मीन्स टू द माइंड दे मीन्स द डैफोडिल्स फ्लैश कहले मो मन भीतर को पड़ी आसुचंदे से माने बारंबार मो मन भीतर आकर्षित होचंदे डांस करचंदे which is bliss of the solitude bliss कहले आनंद solitude कहले निरवता bliss of the solitude means एकता एकुटियार आनंद से कहले which is the bliss of the solitude that he dances with the daffodils तो dance करचंती से the poet इते से भीतर मजी आइचंती when he got the vacant or the pensive mood which is the bliss of the solitude then my heart with pleasure feel तांको हृदयडा तांका हार्टटा प्लीजर कहले आनंद रे भर्ती हो जाई थाए एंड देन माय हार्ट विथ प्लीजर फील्स एंड डांसेस विथ द daffodils सहित से डांस करचंदी एंड लास्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज द फिगर ऑफ स्पीच इज अलिट्रेशन कहले अनुप्रास ओडिया रे अनुप्रास अलंकार कोन जोडे बारंबार व्यंजन वर्णर उच्चारण होतबो देखि नव कालिका बकालिका मालिका अलिकालिका कांतस्परी रक्षा केमंत करी मत करी गति के हेमंत विचारी को सहचरी भावे बचिले एकाथिव काल कथा थिव काल काल को एडे अनुप्रास टू यू ऑल टुडे वी विल लिसन होल द पोएम daffodils and please listen the poem daffodils first. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in a never-ending line along the margin of heaven. 10,000 saw I at a glance, touching their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in gill. A poet could not but be gay
in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth this soul to me had brought. For often, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon the inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Next class, previous class we discussed first stanza. Today class we discuss about stanza 2, 3 and 4th. Please watch stanza 2, 3 and 4th. Thank you.